Dilaram Road. This policy was retreated, reinforced, refreshed in 2016. A fresh MOU was signed between Tehran and New Delhi regarding Connect Central Asia policy. This New Delhi deal got cancelled by Iran with India in 2020 and signed it with China. There are numerous reasons responsible for the change in the policies of Tehran, and that would have far-reaching implications on Pakistan and the region as a whole. ये मैंने purely introduction दिया आपको. इस टॉपिक का क्या है, एक हिस्ट्री है, वहां से मैंने स्टार्ट किया. कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी ऑफ 2006, फिर कंटेम्पररी पे आ गया, फिर ईरान की पॉलिसी शिफ्ट पे आ गया. बॉडी में क्या आ रहा है, जो समरी आ रही है वो क्या है? ईरान पॉलिसी शिफ्ट. क्यों? वाई कैंसल्ड द डील विद इंडिया, वाई द डील साइंड विद चाइना, implications on Pakistan, implications in the region. 4 aspects हैं. मतलब क्या? इन 4 aspects के equal marks हैं. इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को निकाल के फॉर एग्जांपल मैं 16 मार्क्स दे दूंगा, तो 16 मार्क्स का मतलब क्या? 4 मार्क्स ईच. अक्सर हमारा स्टूडेंट या जर्नल स्टूडेंट गलती क्या करता है? क्वेश्चन की डिमांड को पूरी नहीं कर पाता. किसी एक पार्ट को बेतहाशा स्पेस दे देता है, किसी को बहुत कम स्पेस दे देता है. तो आप लोगों को यह पता हो कि इस क्वेश्चन के 4 एस्पेक्ट्स हैं और आपने इन चारों एस्पेक्ट्स को इक्वली ट्रीट करना है. नाउ व्हाई द डील कैंसल्ड विद इंडिया? इंडिया के साथ ये डील क्यों कैंसल हुई? नंबर 1, द इंक्रीजिंग शिफ्ट इन द पॉलिसीज ऑफ न्यू दिल्ली from Iran towards Middle East antagonized Tehran. Thesis statement मैंने एक पैराग्राफ का दिया. Increasing shift in the policies of India from Iran to Middle East antagonized Tehran. That resulted into the cancellation of the deal. कैसे? India has been the second largest importer. India has been the second largest importer of Iranian hydrocarbons. Iranian hydrocarbons का वो second largest importer रहा है in the world. Largest is China. But 2018 onward, 2018 onward, because of US pressure की वजह से India downsized its hydrocarbon imports, specifically oil and gas imports from Iran, and increased the imports from Saudi Arabia, Qatar, Kuwait and Abu Dhabi. यहां से मतलब मिडल ईस्ट से, जीसीसी से उन्होंने इंपोर्ट्स बढ़ा दिए. और उसके पीछे रीजन क्या था? एक ट्रम्प का प्रेशर था. दूसरा मोदी पॉलिसी शिफ्ट था. मोदी का पॉलिसी शिफ्ट था कि मिडल ईस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ईरान. तीसरा वैक्यूम हमने 2015 में क्रिएट किया इन द जीसीसी वर्ल्ड. सऊदी अरब ने हमसे ट्रूप्स मांगे फॉर द वॉर इन यमन विच पाकिस्तान डिड नॉट प्रोवाइड. वैक्यूम हमने क्रिएट किया, उस वैक्यूम को इंडिया ने फिल कर दिया. ठीक. सो क्या हुआ? एक ट्रम्प का प्रेशर, दूसरा पॉलिसी शिफ्ट ऑफ मोदी, तीसरा
power vacuum created by Pakistan या diplomatic vacuum created by Pakistan quickly filled by India. So एक तो ये यू शिफ्ट आया, इसकी वजह से ईरान एंटागोनाइज्ड हुआ, ईरान के एक्सपोर्ट्स में सब्सटेंशियल ट्रेमेंडस डिक्लाइन आया. One. Second, and even more important reason was the slower process of investment made by or carried out by India in Chabagar seaport and other projects under Connect Central Asia policy. Process of investment slow raha from India. The total investment made by India in Chabagar seaport was around $300 million from 2016 till 2020. 2016 till 2020, only $300 million investment being made by India. उसके बाद Chabagar Zidan railway track remained restricted till MOU. वो क्या था? It was only on the paper. MOU was signed, memorandum of understanding was signed, but practical steps were not taken. मतलब क्या? India did not make any kind of financial investment in Chabagar Zidan railway track. Zidan नहीं किया उसने. तीसरा, सेम वॉज द केस विद द गैस पाइपलाइन. गैस पाइपलाइन के साथ भी वही इशू रहा कि इंडिया ने कोई इन्वेस्टमेंट उसमें भी नहीं की. सो द लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन इन्वेस्टिंग in its Connect Central Asia policy, whether Chabagar seaport, the railway track or the rest of the projects, made Iran realize or compelled Iran to rethink the agreement with India and cancel it with India and sign it with China. Force हुआ ईरान तेहरान. दो. थर्ड मेजर रीजन क्या बना? India has been using Chabagar seaport for intelligence purposes. If any country has more intelligence presence in Afghanistan after United States of America, that has been India. India has been using Afghanistan as a launching pad for terrorist attacks in Pakistan. Even it has been using Iranian territories for attacks in Pakistan. For example, 2019 में हमला हुआ कहाँ पे? That is PC गवादर में. और कोट कर रहा हूँ, Kulbhushan Jadhav, the raw agent captured by Pakistan, उसकी confessional statement है कि raw has been using Chabagar seaport for intelligence purposes, for military purposes, but in disguised form. And Iran knew about it. Iran को इसके बारे में पता चला, right? Because of which क्या हुआ? पाकिस्तान ईरान रिलेशंस फर्दर डिटेरियोरेटेड. ईरान पाकिस्तान रिलेशन मजीद खराब हुए. Therefore, Iran decided to stop India from using Chabagar seaport for its intelligence aims, designs against Pakistan, and cancelled the deal with India. 3 आर्ग्यूमेंट्स मैंने आपको दिए. इसी तरीके से वाई द डील वॉज साइंड विद चाइना. डील चाइना के साथ क्यों साइन हुई? नंबर 1, चाइना इज द इकोनॉमिक लाइफ लाइन फॉर ईरान. चाइना ईरान के लिए इकोनॉमिक लाइफ लाइन है. कैसे?
the largest energy importer from Iran has been China. More than 26% of the overall imports, annual imports of China are from Iran each year. दूसरा, when Trump forced अच्छा इससे भी पहले एक और आर्ग्यूमेंट, that is development. When Trump forced Europe, India, Japan and ASEAN countries, to downsize their imports from Iran, energy imports from Iran, China decided to increase its energy imports from Iran. Lifeline की बात हो रही है, दो बातें मैंने कही. तीसरा, when multinational companies under the pressure of Trump pulled out from Iran, especially hydrocarbon sector में जो multinational companies थे, Chinese companies decided to fill the gap, the vacuum. इकोनॉमिक लाइफलाइन बताने की मैंने कोशिश की. मजीद एक और बात भी ऐड कर सकते हैं. China has signed MOUs amounting $480 billion with Iran. The investment would be made up till 2050. This huge magnanimous investment would be made by China in Iran until 2050. तो ईरान के लिए चाइना क्या है? इकोनॉमिक लाइफलाइन है. दैट वाज द रीजन टू गिव द चाबगार सी पोर्ट, द चाबगार जिदान रेलवे ट्रैक टू चाइना. टेक इट फ्रॉम इंडिया, गिव इट टू चाइना. दूसरा रीजन क्या बना? दैट इज ईरान वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर प्रोजेक्ट ऑफ BRI. ईरान BRI का हिस्सा बनना चाहता था. As per the plan of China, of Beijing, Iran was the part of BRI, but in papers only. But on papers only, not in practice. क्यों? Because the Connect Central Asia policy of India was directly in antagonism with China's BRI project. जो इंडिया की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी थी वो डायरेक्ट एंटागोनिज्म में थी विद चाइना's BRI project. And Tehran realized that it would not be in a position to make substantial gains from India's Connect Central Asia policy. But it would speedily and easily become a transit corridor if it comes under the banner, under the flagship project of BRI. Resultantly, Tehran cancelled the deal with India, signed it with China. मजीद implications of the deal क्या हुए या क्या होंगे in the days to come. Implications on Pakistan, part 1. Implications on Pakistan. The security concerns of Pakistan on the western and southern borders would substantially decline. जो security concerns of Pakistan है on the western border, that is with Afghanistan, the southern border, that is with Iran, वो substantially decline करेंगे. कैसे? RAW has been accessing Afghanistan through Iran. It has been responsible for supporting, बड़ा क्लियरली कह रहा हूं, the separatist elements in Balochistan. गलती से भी बलोच separatist elements मत कहना.
सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स इन बलूचिस्तान, सेपरेटिस्ट टेररिस्ट दोनों अल्फाज इस्तेमाल करने हैं इन बलूचिस्तान, लाइक बलोच लिबरेशन आर्मी, लाइक यानी BLA, लाइक बलोच रिपब्लिकन आर्मी BRA, लाइक BLF बलोच लिबरेशन फ्रंट एटसेट्रा। इनका मेजर सपोर्टर कौन रहा है? इंडिया। These organizations have been responsible for terrorist attacks across Balochistan and Karachi. Examples: Balochistan में majority of the attacks being carried out by these organizations. For example, 2019 में हमला हुआ कहां पे? PC गवादर 2019. For example, Chinese workers being abducted from Quetta. For example, RPG attacks हुए इन गवादर। उसके बाद फिर FWO workers were repeatedly targeted. उसके अलावा फिर electricity transmission lines, gas pipeline, that is Sui gas pipeline, railway track, etc. all were targeted, repeatedly targeted by these separatist terrorist organizations. These organizations extended their attacks to Karachi also. Karachi में भी इसने हमले बढ़ा दिए. For example, the Chinese consulate in Karachi was attacked by BLA. और उसके बाद फिर द कराची स्टॉक, ये कब हुआ था? 18 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ 2020 में, अगेन BLA ने किया। सो द सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स इन बलूचिस्तान हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिस्ट अटैक्स इन बलूचिस्तान एंड कराची। फर्दरमोर द जिहादिस्ट एंड सेक्टेरियन टेररिस्ट आउटफिट्स or general Taliban and sectarian terrorist outfits like ISKP, Islamic State of Khorasan Province, ISKP, दूसरा लश्कर-ए-जंगवी, तीसरा TTP, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान. They have also been responsible for attacks across Pakistan, specifically Quetta and Karachi. And there is a long list of evidences, tangible data that gives the impression, stronger impression कि India is covertly supporting these terrorist organizations also to destabilize Pakistan. Objectives क्या हैं? Destabilization of Pakistan, sabotaging CPEC project. ठीक, और इस सब के लिए इस्तेमाल होता रहा क्या? ईरान एज क्या कहते हैं टेरिटोरियल एक्सेस, टेरिटोरियल एक्सेस के तौर पे इस्तेमाल होता रहा। कौन? ईरान। लेकिन सब कुछ डिस्गाइज्ड फॉर्म में था। फिर चबगार सी पोर्ट वाज यूज्ड एज अ बेस। अब चबगार सी पोर्ट टेकन फ्रॉम इंडिया गिवन टू चाइना, उससे क्या होंगे? इंडिया का रोल ईरान में, अफगानिस्तान में और बलूचिस्तान में और कराची में जो उसका अटैक्स करता रहा है वो डिक्लाइन होगा। एक दूसरा, गवादर चबगार राइवलरी वुड ऑल्सो डिक्लाइन। गवादर चबगार राइवलरी वुड ऑल्सो डिक्लाइन, वो भी डिक्लाइन करेगी। बोथ द सी पोर्ट्स हैव बीन नेचुरली राइवल्स, दोनों राइवल्स रहे हैं। एंड द राइवलरी वॉज एक्सरबेटेड, इंक्रीज्ड बाय द इंडियन फैक्टर। कैसे? एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोनों सी पोर्ट्स कैसे राइवल्स हैं? द फ्यूचर ट्रेड फ्रॉम द लैंड लॉक्ड countries like Afghanistan and Central Asian republics
to the Arabian Sea to be conducted via Chabagar or Gwadar. That is the competition, or that has been the competition. सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और उसके बाद रशिया एक्सेस करे अरेबियन सी को थ्रू गवादर और चबगार, ये कंपटीशन रहा है. एंड दिस कंपटीशन हैज बीन एग्जर्बेटेड बाय द इंडियन फैक्टर. वो इंडियन फैक्टर ने एग्जर्बेट कर दिया, इंक्रीज कर दिया, एंटागोनाइज कर दिया. कैसे? Accessing Central Asia and Afghanistan through Iran bypassing Pakistan. Connect Central Asia policy theme line. Accessing Central Asia and Afghanistan through Iran bypassing Pakistan. Now, as the seaport has been taken back from India and given to China, automatically the rivalry would decline. It would be further declined by China, or China would take further initiatives to decline the rivalry between the two seaports. क्यों? Because China is investing in both the seaports and it cannot afford to make the two seaports or to become the two seaports as rivals. चाइना ये अफोर्ड नहीं कर सकता. सो इट वुड टेक इनिशिएटिव्स. फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, क्या इनिशिएटिव्स लेगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बी एस्टेब्लिश्ड ऑन पाक ईरान बॉर्डर्स. पाक ईरान बॉर्डर्स पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे जो कि बेनिफिट करेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे ऑन द टू सी पोर्ट्स. फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के लिए इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? ठीक. नेक्स्ट, implications on the region. One, सबसे बड़ा implication, India would be out from Iran and China would make substantial entry into the country in future. इंडिया अफगानिस्तान से, ईरान से निकलेगा, अफगानिस्तान नहीं, ईरान से, और चाइना सब्सटेंशियल एंट्री करेगा इनटू द कंट्री. कैसे? द प्रोसेस ऑफ डाउनसाइजिंग इंडियंस प्रेजेंस और इंडियन एंगेजमेंट्स विद ईरान have already been on decline. वो डिक्लाइन पे रहे हैं, as being told earlier. मजीद डिक्लाइन होंगे. Now, India does not have major economic or bigger economic engagements with Iran anymore. On the other hand, China is making $480 billion investment alone in Iran, the biggest investment in the region or any country in the region. इस रीजन में किसी भी मुल्क में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो कहां पे कर रहा है? ईरान में. तो चाइना इज मेकिंग a phenomenally strong entry into the country that would certainly block the way or the revival or the chances of revival of India's relations with Iran. It's a huge diplomatic setback, geostrategic, geopolitical setback to India and victory to China. दूसरा, India's presence in Afghanistan would also decline. India's presence in Afghanistan would also decline. कैसे? The process of a declining role of India in Afghanistan began after US Taliban Doha deal. यूएस तालिबान दोहा डील की वजह से इंडिया का रोल अफगानिस्तान में कम होना शुरू हुआ. कैसे? पाकिस्तान became the key player in the negotiation process and India was kept out.
दूसरा, इंट्रा अफगान डायलॉग, दैट इज अफगान गवर्नमेंट अफगान तालिबान नेगोशिएशंस, उसमें दो बड़े प्लेयर्स हैं, यूएस एंड पाकिस्तान. इंडिया इज इंटेंशनली केप्ट आउट हियर ऑल्सो, यहां पे भी बाहर है. और फिर ईरान अफगानिस्तान इंक्रीजिंग रिलेशंस with Pakistan, like the visits of Prime Minister of Pakistan to Afghanistan, the chief negotiator from Afghan government Abdullah with Taliban's visit to Pakistan, etc. यहां पे भी इंडिया बाहर होता जा रहा है, पाकिस्तान ज्यादा एंट्री कर रहा है. अब India also lost the access route to Afghanistan, territorial access route to Afghanistan that was made via Iran, वो खो चुका है. अब मजीद रोल उसका कम होगा. ठीक, उसके बाद फिर रोल ऑफ पाकिस्तान वुड इंक्रीज इन अफगानिस्तान. पाकिस्तान का रोल अफगानिस्तान में मजीद इंक्रीज होगा. कैसे? दोहा नेगोशिएशन में हमारा रोल आया, इंट्रा अफगान नेगोशिएशन में हमारा रोल आया. अब पाकिस्तान वुड ट्राई टू मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ सॉफ्ट पावर इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में सॉफ्ट पावर में हम ज्यादा रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे. और सबसे बड़ा कहां से हम स्टार्ट करेंगे? नेगोशिएशन के अलावा अफगान मिलिट्री ट्रेनिंग हम करेंगे. और देखिएगा इन द डेज टू कम हम ये ऑफर जरूर करेंगे उनको, और वो अफगान गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, मार्क माय वर्ड्स. नेक्स्ट, उसके बाद चाइना का रोल वुड ऑल्सो इंक्रीज इन अफगानिस्तान. चाइना का रोल भी अफगानिस्तान में ज्यादा इंक्रीज होगा. China has already been playing a leading role in the Afghan peace process. कैसे? एक, quadrilateral talks, quadrilateral talks, quadrilateral talks, US, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसमें चाइना ने की रोल प्ले किया. उसके बाद चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ट्राइलेटरल टॉक्स, उसको भी लीड किया किसने? चाइना ने. अफगान गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट्स आर इंक्रीजिंगली ब्रॉट क्लोजर बाय बीजिंग. बीजिंग उसमें रोल प्ले कर रहा है. तो अफगानिस्तान में चाइना का रोल, और फिर चाइना इज बिकमिंग द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन अफगानिस्तान. सो चाइना का रोल यहां पे बढ़ेगा. इंप्लीकेशंस ऑन द रीजन. और एक पॉइंट और, चाइना हैज मेड अ ह्यूज जियो पॉलिटिकल लीप ऑफ, क्या कहता है, स्टेप फॉरवर्ड. बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल गेन किया है. जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन, जियो पॉलिटिकल. कैसे? Gwadar was already been given to China by Pakistan for development. Now Chabahar would also be developed by China. In future means क्या? China would increase its trade into the Arabian Sea via Pakistan and Iran. एक तो ये होगा. दूसरा, China may have more and more military डन. ऐसे और कई सारे पॉइंट्स. सो कंक्लूजन, पूरी कहानी पे दोबारा वापस क्या आएंगे कि द कैंसलेशन ऑफ चबगार डील विद इंडिया एंड साइनिंग इट विद चाइना इज अ डिप्लोमेटिक, क्या कहते हैं, अर्थक्वेक. डिप्लोमेटिक अर्थक्वेक आया है इन द रीजन, जिसमें इंडिया लूजर है, चाइना विनर है.
और जिसका एक मेजर बेनिफिशियरी कौन होगा? पाकिस्तान. एंड द चांसेस ऑफ द रीजनल इंटीग्रेशन वुड ऑल्सो इंक्रीज. Chances of peace in the region would also increase. Chances of the integration of the regional countries कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, ये इंटीग्रेट होंगे. पीस के चांसेस बढ़ेंगे, ट्रेड के चांसेस भी बढ़ेंगे. डन. ये था हमारा टॉपिक नंबर 1. नेक्स्ट टॉपिक. हर टॉपिक को इतना तफसील में नहीं जाऊंगा, अब चीजें थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, लेकिन चंद मैंने एक्सप्लेन करने प्रॉपरली क्वेश्चन फॉर्म में. आप ऐसा क्वेश्चन करके लाओ, किसी भी एग्जामिनर को चेक करवाओ. अल्लाह के फजल करम से मेरी जिम्मेदारी मार्क्स की, लेकिन करो. हां, हर किसी ने टिक टू कॉपी नहीं करना है, थोड़ा सा खुद भी उसमें चीजें ओमिशन एडिशन करो, अपने लिंग्विस्टिक स्टाइल से उसको डिफरेंट बनाओ फ्रॉम माइन एंड फ्रॉम द रेस्ट टू स्टे डिफरेंट. ठीक. नेक्स्ट. Abraham deal. The deal between Israel and UAE. Objectives behind the deal. Objectives क्या हैं behind the deal and its implications on the region. इस डील के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और फिर इसकी implications क्या होंगे. And what would be the policy options with Islamabad. इस्लामाबाद के पास पॉलिसी ऑप्शंस क्या होंगे. ठीक. In the last year of his rule, Trump, the President of America, made a huge diplomatic move to bring the two Arab nations, that is Israel and UAE, closer. By signing the Abraham Accord. Not only US was interested in the deal, but Israel and UAE were equally interested in the deal. This deal would have far-reaching implications on the region. Like, implications क्या होंगे? Role of Iran would be curtailed. More and more normalization of relations between Israel and the Arab world. ये पॉइंट नंबर 1 होना चाहिए. दूसरा फिर ईरान नंबर 2 होना चाहिए. तीसरा क्या होगा? दैट इज increasing armament, weaponization in the Persian Gulf, etc. ये आपका होगा इंट्रोडक्शन.
Now, salient feature of the Abraham deal, salient features of the Abraham deal क्या क्या है? Number one, both Israel and UAE recognized each other as sovereign states. इजराइल और यूएई दोनों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर दिया एज सॉवरन स्टेट्स. बोथ द कंट्रीज इनिशिएटेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ईच अदर बाय ओपनिंग एम्बेसीज इन द कैपिटल्स ऑफ ईच अदर. डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए, एम्बेसीज ओपन कर दिए. दूसरा, डिफेंस कोलैबोरेशन. US would provide F-35 jet fighters to UAE. दूसरा, Israel would collaborate with UAE in countering terrorism, cyber terrorism, in particular journal terrorism, or terrorism overall, specifically cyber terrorism, by building the cyber anti-cyber terrorism capacities of UAE. Mazid, negotiations are also underway between the two countries regarding naval collaboration, Navy. Dusra, the provision of helicopters to UAE. And the list is quite long. Defense collaboration. Tisra, both the countries decided to initiate people to people contacts. एक दूसरे के साथ people to people contacts establish करना. कैसे? Free visa announced by both the countries to each other. दूसरा, visa on arrival at airport would be given. और फिर ड्यूरेशन ऑफ द वीजा क्या होगा? 3 months. मजीद, the increasing exchange of visits by the trade delegations of each other countries. Trade delegations increasingly visit कर रहे हैं to each other countries. ठीक, इसके बाद फिर both the countries would collaborate in technological development. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में कोलैबोरेट करेंगे. इजराइल इज पोजेसिंग मोस्ट क्या कहते हैं, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज इन द रीजन, एंड यूएई वांट्स टू बेनिफिट फ्रॉम दीज टेक्नोलॉजीज, स्पेसिफिकली एंटी साइबर टेररिज्म कैपेसिटीज. तो टेक्नोलॉजीज में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना वगैरह वगैरह. इंट्रोडक्शन के फौरन बाद आप ये सेलिएंट फीचर्स का पॉइंट एलेबोरेट करेंगे. देन व्हाई इजराइल, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डील.
वाई इजराइल साइंड द डील, इजराइल ने ये डील क्यों साइन की? Israel has been facing a diplomatic insecurity for long. It has been striving for recognition from the Muslim world. Recognizing Israel as a sovereign state by the Muslim world, उसके लिए strive करता रहा है। कैसे? एलेबोरेट कर रहा हूं। Israel being recognized as a sovereign state by a series of Muslim countries, by a series of world countries. West ने overall recognize किया, West recognized it. Majority of the non-Muslim countries, whether Asian, African, etc., also recognized it as a sovereign state. They established diplomatic relations with Israel. In 1978, Egypt, through Camp Divert, 1978, Egypt was the first Arab nation that recognized Israel as a sovereign state. In 1994, अगर मैं गलत ना हूं तो in 1994 Jordan also recognized Israel as a sovereign state. उसने भी रिकॉग्नाइज कर दिया। मजीद but majority of the Muslim countries in general, Arab world in particular, remained reluctant, hesitant to recognize Israel as a sovereign state. एक सेकंड, अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ओके, इसके बाद फिर UAE that has been the most important या second most important country in GCC world. GCC में दूसरा important मुल्क after Saudi Arabia कौन है? UAE. That recognized Israel as a sovereign state. It's a huge diplomatic win for Tel Aviv. Not only that, सिर्फ ये नहीं, Bahrain recognized it as a sovereign state. So did Morocco. Morocco ने भी recognize कर दिया. Another African Arab nation है लेकिन African है। उसके बाद फिर Lebanon, Sudan has recognized it as a sovereign state. Sudan ने कर दिया। Lebanon is also thinking of recognizing Israel as a sovereign state. एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन है for Tel Aviv, for Israel. Furthermore, Saudi Arabia seems to be increasingly softening its stance on Israel. सऊदी अरेबिया भी अपना स्टांस इजराइल पे सॉफ्ट किया जा रहा है। कैसे? द एरियल ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, इजराइल एंड यूएई, कंडक्टेड थ्रू सऊदी अरेबिया। एरियल ट्रांसपोर्टेशन किसके जरिए हो रही है? यूजिंग द सऊदी अरेबियन एयर स्पेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ इजराइल। सो इजराइल को क्या चाहिए था? डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन जो हो रहा है। मजीद
द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएई, क्या? डिफेंस, टेक कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। आप यहां पे दोनों को एक पैराग्राफ में बता देंगे या अलग अलग पैराग्राफ में बता देंगे। यूएई को क्या चाहिए? Its interests across the region are being threatened by non-state actors. Its interests in the region are being threatened by the rise of the non-state actors. एक दूसरा, the growing presence of Iran in the region is a setback for the Sunni Arab world in general, UAE in particular. In future, Turkey may be a threat. For the Arab nations. As Turkey is expanding once again, वो expand कर रहा है और उसका claim है किस पे? Arab world पे। And 2023, जो year 2023 is in the offing, और वो 100 years agreement would be over. तो टर्की अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है और वो सऊदी अरेबिया, यूएई एंड अदर अरब नेशंस नहीं चाहते। For that, Saudi Arabia, UAE needs to strengthen its defense. इसके लिए वो अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है by acquiring क्या कहते हैं, strengthening its air force, उसके बाद its navy, उसके बाद its technological capacities. ठीक? Why US was interested in the deal? US क्यों interested रहा in the deal? US ने ये डील क्यों करवाई? Both Israel and GCC world are the closer allies of United States of America, have been the closer allies of United States of America. It has been the long-standing policy, wish, demand of White House to bring the two closer. इन दोनों को करीब लेके आना। और क्यों करीब लेके आना? इससे क्या होगा? वन, कंटेनमेंट ऑफ ईरान। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ इजराइल, इजराइल सिक्योर होगा। तीसरा, प्रमोशन ऑफ यूएस इंटरेस्ट, यूएस इंटरेस्ट प्रमोट होंगे। एक तो इस वजह से यूएस ने किया। दूसरा, यूएस every government in USA, whether of Republicans or Democrats, वो Republicans हों या Democrats हों, वो क्या करते रहे हैं? They have been pursuing, protecting the interests of Israel.
is a Jewish state. कैसे? US is responsible, या has been responsible for veto करना every resolution that was against Israel on the platform of UN Security Council. दूसरा, US has been following the policy of establishing Greater Israel expand करना, बनाना. तीसरा, strengthening the defense of Israel. US has played a leading role in that. अब acquiring diplomatic support, recognition for Israel is a major breakthrough made by Jared Kushner, the son-in-law of the outgoing President of America, Mr. Trump. Done? So US ने क्यों किया? Implications क्या होंगे? Implications on the region, Persian Gulf पे इसके implications क्या होंगे? Number one, increasing normalization of relations between the Arab world, Muslim Arab world and Israel. Muslim Arab world और इज़राइल के दरमियान में increasing relations बनेंगे, normalization of relations होगा. कैसे? Egypt already has become the key ally of Israel. So has been Jordan. Jordan भी बन चुका है. Lebanon already have been having soft corner on Israel. Other than हिजबुल्ला के अलावा लेबनान की हुकूमत का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है टुवर्ड्स इजराइल. अब UAE has recognized Israel, so has Bahrain. And the rest of the Arab nations. Now, Bahrain's recognition of Israel as a sovereign state is a huge setback to Iran. क्योंकि बहरीन is a Shia dominant country ruled by a Sunni king. तो अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहा हूं. इजराइल, सऊदी अरेबिया, GCC या अरब वर्ल्ड नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन के बाद दूसरा पॉइंट क्या है? दैट एज अ कंटेनमेंट ऑफ ईरान. द रोल ऑफ ईरान वुड बी कंटेन्ड. ईरान का रोल कंटेन होगा in the region. Iran has been increasing its presence in the Middle East for quite some time now, specifically after the JCPOA agreement. After the JCPOA agreement or P5+1 agreement. कैसे? It provided Iran with an opportunity to stabilize its economy and to provide financial and military support to its allies, Iran ke allies and proxies in the Middle East. Iran ke allies like Bashar al-Assad, like Iraqi government, और फिर proxies like Houthis, like
Mehdi Malaysia in Iraq, like Hezbollah in Lebanon. Support increase karna. And this tremendous increase, revival of Iran in the Persian Gulf has been a setback, has been a threat, setback, not only to Israel, but also to the GCC world. So because of this deal क्या होगा, एक coalition बनेगा between the Sunni Arab world and Israel against Iran. ईरान के खिलाफ एक coalition बनेगा, क्योंकि ईरान is the common threat. ईरान common threat है. Next, मजीद the chances of weaponization in Middle East would increase even further. Chances of weaponization Middle East में मजीद बढ़ेंगे. Chances of weaponization in the Middle East would increase even further. मजीद बढ़ेंगे. कैसे? Israel has been the major military power in the Persian Gulf. इस रीजन में सबसे बड़ा मिलिट्री पावर कौन रहा है? इजराइल. It is an unannounced nuclear power, having a potentially strong air force, even surprisingly strong missile system. Secondly, Iran has been a potential military power in the region, increasingly investing in its military, specifically its missiles technology. Recently, it developed ballistic missile system. तीसरा, हाँ, ईरान में मजीद क्या है? दैट इज हैविंग अ पोटेंशियल नेवी, पोटेंशियल नेवल पावर है, और वो भी कहां पे? स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में. मजीद, सऊदी अरेबिया हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स, और वो भी मोस्टली कहां से? फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. Carried out series of military agreements with the USA during the time of Obama and even in the time of Trump. Mazid, UAE seems to be on the track of weaponization. UAE weaponization कर रहा है, acquire कर रहा है F-35 jet bombers. और फिर उसके बाद यूएई के बाद नेक्स्ट इन द पाइपलाइन कौन है? इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन द यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज इज कतर. कतर चाहता है कि अपने वेपनरीज को स्ट्रॉन्ग कर दे. वो भी F-35 जेट फाइटर्स मांग रहा है फ्रॉम यूएसए. बट नाउ क्या हुआ है? बाइडेन हैज टेम्पररली सस्पेंडेड
the recent deals made by Trump with UAE and Saudi Arabia. मतलब वेपनाइजेशन तो हो रही है, लेकिन ये डील की सस्पेंशन है, वो क्या करेंगे? may lesser down the chances of weaponization of the Middle East, of the Persian Gulf overall. Mazid objectives: the policies of Israel to capture or territorial expansion, yani territorial usurpation, capturing the Palestinian territories, may slow down. Jared Kushner and one of his interview stated, उन्होंने क्या कहा कि Israel has two options, Tel Aviv has two options in its in front of it. और वो क्या है? One, either to continue the policy of territorial expansion, usurpation, or to get far bigger achievement or make a far bigger achievement of क्या कहते हैं, diplomatic recognition. Diplomatic recognition. Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel, seems to have convinced. कैसे convinced हुआ? कि the policy of territorial expansion, that is usurping the Palestinian territories, specifically the Jordan Valley or West Bank, Jordan Valley, or which is also called West Bank, would be delayed. ये डिले होगा क्योंकि UAE, Bahrain and other Muslim countries which recognized Israel as a sovereign state has one of the precondition. और वो precondition क्या रहा? West Bank would not be annexed by Israel. So process of annexation may slow down. Implications बताएं मैंने आपको. लास्ट पार्ट क्या है? पॉलिसी ऑप्शंस विद पाकिस्तान. Pakistan or Islamabad has reiterated its stance time and again. हमने अपना stance time and again reiterate किया. और वो क्या है? कि Pakistan would not recognize Israel as a sovereign state until and unless Pakistan would not recognize Israel as a sovereign state until and unless the two-state concept is not applied. जब तक two-state concept apply नहीं होता and Israel does not go back to its pre-1967 boundaries. जब तक टू स्टेट कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता, यानी इजराइल एंड पैलेस्टाइन एज सॉवरन स्टेट्स, और दूसरा इजराइल प्री 1967 बाउंड्रीज पे वापस नहीं जाता, which seems to be highly improbable. ठीक,
दूसरा हमने क्या कहा कि यूएई इज द एलाई ऑफ पाकिस्तान, क्लोजर एलाई है, क्लोजर फ्रेंड है ऑफ पाकिस्तान, बट इट हैज गॉट इट्स ओन पॉलिसी प्रायोरिटीज, उसके अपने पॉलिसी प्रायोरिटीज हैं। देयरफॉर इट वुड नॉट कमेंट अपॉन the policy options adopted by UAE regarding Israel. There also seems to be a pressure on Pakistan. पाकिस्तान पे प्रेशर नजर आ रहा है from the Arab world, at least as per media reports. और वो प्रेशर क्या है? टू रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ सॉवरन स्टेट, कि इजराइल को रिकॉग्नाइज किया जाए एज अ सॉवरन स्टेट। बट पाकिस्तान हैज आउटराइटली डिनाइड। वन ऑफ द मेजर रीजन इज, हमने क्यों डिनाई किया है? द पब्लिक ओपिनियन इज आउटराइटली अगेंस्ट इट। Second, the ideology of Pakistan does not support the idea. हमारी जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजिकल बेस है, वो इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करता। ठीक, कंक्लूड कर रहा हूं। द Abraham deal and the post-deal scenario, where 4 other Arab nations recognized Israel as a sovereign state, is a huge diplomatic development in the politics of Middle East, where Arab world has decided to become friendly or to become friend of Israel and end its antagonism with the country, and to become soft over the policies of Tel Aviv and to contain Iran in the region. This would have far-reaching implications on the region as a whole, whether it is the Arab world, Muslim Arab world, Israel or Iran or the rest of the countries in the region. ये टॉपिक भी खत्म। आज आप लोगों ने थकना नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि चंद टॉपिक्स प्योरली क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ाऊं। आप लोगों के साथ मेरी कोशिश ये भी होगी कि जो पेपर हमारे चेक हो रहे हैं उसकी फाइनल रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस होंगे। जिन बच्चों ने पेपर हमारे साथ दिए हुए हैं वो भी डिस्कस होंगे, और जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बनाए गए थे, वो क्वेश्चंस क्या डिमांड कर रहे थे और आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए हुए होंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। उस पर भी आपको एक लेक्चर ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले मुझे टॉपिक्स पढ़ाने दें। मैं प्योरली क्वेश्चन फॉर्म में चल रहा हूं, टॉपिक वाइज नहीं चल रहा हूं, क्वेश्चन फॉर्म में चल रहा हूं, स्टेटमेंट बना रहा हूं और आपको आंसर कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन, दैट इज Saudi Arabia Iran rivalry, Saudi Arabia Iran rivalry,
implications on the Ummah as a whole, या implications on Middle East and Pakistan. Middle East और पाकिस्तान पे उसकी implications. Then way out from Islamabad. इस्लामाबाद के लिए way out क्या है? ये वो ऑफ हुआ हुआ है. अपने किसी को कहना है कि मुझे आई नीड वाटर. नाराज ना हो प्लीज. ओके, थैंक यू. इसकी चार्जिंग टाइमिंग इतनी होती है? ओके. यहाँ पे बाहर कोई लड़का होगा, किसी को बता देंगे. थैंक यू. ब्रेक में 8 बजे के आसपास करूंगा. ये टॉपिक ख़त्म करूंगा, उसके बाद ब्रेक करूंगा. Saudi Arabia and Iran are geostrategic rivals. Saudi Arabia, Iran geostrategic rivals हैं. इसकी चार्जिंग टाइमिंग इतनी होती है? And this rivalry, has exacerbated in the recent years, where Saudi Arabia is a status quo power, Iran is the revisionist power. The rivalry, the geostrategic rivalry between the two countries could be explicitly seen in Yemen. यमन में हम देख सकते हैं, सीरिया, बहरीन, लेबनान, इराक. और फिर both the countries have adopted sectarian-led policies against each other to pursue their strategic objectives. Sectarian-led policies adopt की दोनों ममालिक ने for pursuing their geostrategic objectives. That has far-reaching negative implications on the Middle East and Pakistan. Pakistan needs to take numerous policy options in order to minimize the impacts on the country and to play the role of mediator between the two countries. फिर मैंने प्योरली आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की. कैसे जियोस्ट्रेटेजिक राइवलरी है बिटवीन द टू कंट्रीज. बेटा हेलो, मुझे गर्म पानी चाहिए. नहीं, बाकी जाओ, यही दे दे. थैंक यू, वेरी काइंड.
Yemen has been a sectarian and geostrategic battleground for both Saudi Arabia and Iran for the past 5 years or so. Or since 2015, Yemen has been a battleground for both Iran and Saudi Arabia to pursue their geostrategic objectives in the country. कैसे एलेबोरेट करता हूं एक ही पैराग्राफ में, ज्यादा नहीं जाएंगे. In Yemen, Saudi Arabia supports Mansour Hadi's government not only with finance but also with military equipment. As GCC in general, Saudi Arabia in particular made aerial strikes, missile strikes against the Iran-backed Houthi rebels. Iran calls the Houthi rebels as freedom fighters. But Saudi Arabia calls them terrorists. Iran denies any kind of direct military support for the Houthi rebels. But Saudi Arabia and the rest of the GCC countries are adamant on their stance. और वो क्या? That Iran backs up the rebel forces in Yemen that took over majority of the territories in the countries in 2015. Even the capital, Sana पे कब्जा किया. Now, why the two countries are supporting their respective parties? Saudi Arabia supports the government, Iran supports the rebels. क्यों? Because Yemen is of immense geostrategic importance for both the countries, specifically Saudi Arabia. कैसे? Yemen has a long shared border with Saudi Arabia. On both the sides of the border, Shia population resides. Shia population reside करता है दोनों sides of the border पे. Iran's growing presence in Yemen would endanger or would provide the opportunity to Tehran to influence the Shia population of Saudi Arabia. Furthermore, Houthi rebels have become an existential threat for the internal security of Saudi Arabia. As in 2019 हमने क्या देखा? The two major oil fields of Aramco, दो बड़े oil fields of Aramco being hit by Houthi rebels. That resulted in 50% cut of Saudi Arabian oil production. At least 50% cut आया in Saudi Arabian oil production. Setback to Saudi Arabia, benefit to Iran, simple. Mazid, the Strait of Aden, where more than 70% of Saudi Arabia oil trade passes. Iran growing presence in Yemen provides it with an opportunity to become an existential threat for the Saudi Arabian trade and the Strait of Aden. Geostrategic objectives. ठीक, बाकी आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा. दूसरा, इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? सीरिया is exactly the vice versa.
is the situation in Syria, where Iran supports the Bashar al-Assad's government. ईरान सपोर्ट करता है बशर अल-अस्साद की हुकूमत को, while Saudi Arabia supports the FSA rebels and al-Nusra fighters. FSA rebels and al-Nusra fighters को सपोर्ट कर रहा है. Now, Iran supports the government of Assad with finance, with the troops, with weapons. On the other hand, Saudi Arabia, in particular GCC in general, supports the rebel forces with finance, with weapons, etc. Now, geostrategic objective क्या है? Iran wants the continuation of Assad government to be in power. Continuation of Assad government. Saudi Arabia क्या चाहता है? The end of Assad and election in Syria. Iran wants the continuation of Assad जो शिया है और शिया डोमिनेंट गवर्नमेंट रहेगी इन ईरान, मतलब इन सीरिया, मतलब ईरान्स इन्फ्लुएंस वुड कंटिन्यू. बट सऊदी अरेबिया का क्या चाहता है? री इलेक्शन और इलेक्शन इन सीरिया. मतलब क्या? इफ इलेक्शन अकर्स, सुन्नी डोमिनेंट गवर्नमेंट वुड come into power. क्यों? Because Syria is a Sunni dominant country. Furthermore, क्या है? Syria has been the supply route for Iran to access Hezbollah in Lebanon वगैरह. And that is the reason कि दोनों के इंटरेस्ट क्या हैं? Conflicting है, contradicting है, and Syria is in a unending civil war. और इसके पीछे मेजर फोर्सेस कौन है? ग्लोबल लेवल पे यूएस एंड रशिया, रीजनल लेवल पे सऊदी अरेबिया एंड ईरान. तीसरा एग्जांपल आप एक्सप्लेन करेंगे किसका? बहरेन. इन 2011 में अपराइजिंग अकर्ड इन बहरेन. द अपराइजिंग वाज सपोर्टेड बाय, सीक्रेटली सपोर्टेड बाय तेहरान. तेहरान उसको सपोर्ट कर रहा था. बहरेन इज अ शिया डोमिनेंट कंट्री विद अ सुन्नी किंग. अपराइजिंग हुई इन बहरेन 2011 में और उसको क्विल किया, सप्रेस किया द किंग ऑफ बहरेन ने विद द सपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया. और अब हम क्या देख रहे हैं कि बहरेन रिकॉग्नाइजिंग इजराइल इज अ सॉवरन स्टेट. मेजर रीजन उसके पीछे क्या है? कंटेनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ईरान. यही चीज हम कहां पे देख रहे हैं? इराक में. इराक में क्या हो रहा है? Iran's influence tremendously increased in Iraq. ईरान में, इराक में ईरान का इन्फ्लुएंस ट्रेमेंडसली इंक्रीज कर गया. कैसे? इन 2004 अंडर नूरुल मलकी. क्यों? बिकॉज इराक इज अ शिया डोमिनेंट कंट्री. ऑटोमेटिकली सेक्टेरियन अफिनिटी की बुनियाद पे ईरान रोल इंक्रीज्ड. दूसरा क्या हुआ? द राइज ऑफ मेहदी मलेशिया, दैट इज अ शिया फोर्स.
It entered into alliance or normal relations with the government in Iraq. ईरान का इन्फ्लुएंस मजीद इंक्रीज करना. तीसरा, ईरान फाउंड अ ग्राउंड एक्सेस टू सीरिया वाया इराक. ईरान को ग्राउंड रास्ता मिला थ्रू इराक टू एक्सेस सीरिया एंड लेबनान. मजीद, Iran played a leading role in the defeat of ISIS, not only in Syria but also in Iraq. So Iran का influence increase होना. And Iraq is the immediate neighbor of Saudi Arabia. Growing influence of Iran in Iraq is a geostrategic setback to Saudi Arabia. यही बातें आप लेबनान की करेंगे. In Lebanon, government forces being supported by Saudi Arabia and Hezbollah being supported by Iran.